Good evening, everyone. I, Kartik Mandania, we all know we have already conducted 5 webinar sessions till now. Hope you already had watched them and learned extraordinary something extraordinary and knowledgeable. Today is a great pleasure for us as we also have with us respected CICASA chairman of Raipur branch of CIRC of ICAI, CA Amitabh Dubey sir. I welcome you, sir. Thank you. Hello, Amitabh Dubey sir. सर। मैं सीए अमिताभ दुबे, सिकासा चेयरमैन ऑफ रायपुर ब्रांच। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और पूरी टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं। बैंक ऑडिट और सारे इसमें जो हमारे सीए स्टूडेंट हैं उसको हमने शामिल किया है। एक्चुअल में जब हम बैंक ऑडिट पे जाते हैं तो हमारे की पर्सन होते हैं, वो हमारे यही आर्टिकल्स होते हैं, हमारे ऑफिस के हमारे ये साथी होते हैं। इनके बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं और इन छोटे छोटे पॉइंट को लेकर आज जैसा कि मेरा बात हो रहा था, फैकल्टी सर से मेरी बात हुई, बिलासपुर सिकासा की टीम से बात हुई, उनके चेयरमैन से बात हुई, तो ये मालूम पड़ा कि जो सीए स्टूडेंट है, हमारे सिकासा स्टूडेंट हैं, उनको ध्यान में रखकर आज का सेमिनार डिजाइन किया गया है। मैं एक बार फिर से सारे लोग का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फैकल्टी को और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक पूरी रायपुर सिकासा ब्रांच की तरफ से। थैंक यू। Thank you for your kind words, sir. Here we also have with us respected CICASA chairman of Bilaspur branch of CIRC of ICAI, CA Sachendra Jain, sir. I welcome you, sir. थैंक यू। मैं सीए सचेंद्र जैन, सिकासा चेयरमैन बिलासपुर ब्रांच, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की ये जो सेमिनार के हमने वेबिनार का जो हमने आयोजन किया है, इसके लिए सबसे पहले इंदौर सिकासा ब्रांच का और रायपुर ब्रांच का दोनों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही कम समय में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और अभी जैसा सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारा ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा, इसके बाद अगर सबसे पहले हमारे पास कोई वर्किंग आएगी तो शायद बैंक ऑडिट ही होगा, जिसका प्रेशर एकदम से ऑफिस शुरू होते ही चालू होगा। तो इस बीच में मेरी समकित सर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि बच्चों को ध्यान में रख के उन्होंने पूरे प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, जैसा कि अमिताभ भैया ने भी बताया। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे इस बात को समझें कि बैंक ऑडिट में जाके सीधा ऑडिट को फाइंड नहीं करना रहती। उनके लिए जरूरी है छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना, कुछ छोटे छोटे ग्राउंड वर्क को ध्यान में रखना, जिनके बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट की नींव रखी जाती है। तो आगे मैं ज्यादा और ना कुछ कहते हुए सीधा मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी सेशन को शुरू किया जाए ताकि बच्चों के ज्ञान में वर्धन हो। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ रायपुर और इंदौर ब्रांच का। थैंक यू। Thank you for your generous words, sir. So here we are moving on for our last webinar session on the topic Bank Audit 2020 with CA Samkit Bhandari, sir. I welcome you, sir. I will briefly introduce Sir to all of our viewers. Sir is having an expertise in our profession of more than 15 years. He is the current CICASA chairman of Indore branch of ICAI. He was also at the post of secretary of Indore branch of ICAI. Sir has an expertise in the field of project finance, subsidy, audit, taxation, and others. So here I would request Sir to take the session forward. Thank you, sir. Thank you, Kartik. Thank you, Amitabh Dubey ji, for giving me a great opportunity here, as well as Bilaspur CICASA chairman and past chairman CA Sachendra Jain Saab from Bilaspur. It's my honor to be here with the students of Indore, Raipur and Bilaspur. Nearly the whole MPCG is covered as far as the number of students are covered. Nearly 90% of the students belong to this particular places itself. Now, this is the 6th webinar as well as the last webinar, but it is not so. We have planned the next 6 webinars. Tomorrow again we'll be here by 5:30. Now,
I would like to start that this particular webinar is so important that the first, as Sachendra Jain Sahab has said, that the first assignment we'll be getting after this lockdown will be our bank branch audit. And though we are expert in audit, we are expert in income tax, we are expert in GST, but we have to be expert in bank audits as well. The reason being, it is a very typical kind of the audit which we encounter only once or twice or maximum thrice in our articleship period. So it is very important, and every article, every CA student is supposed to perform very well there, but due to lack of the preparation, many times we are placed in the bank audit, but we cannot perform it. The only reason is the background material we don't have. We know tax audit, we know income tax, we know TDS, everything, but we are not very happy doing bank branch audit or concluding that. The only reason is the preparation. Now, this time we won't be disheartened. We'll be performing our best in the bank branch audit. Now, I would request that my slide should be shown here. Thank you. So to start with the statutory bank branch audit 2020, we'll cover up the majority parts. We'll try to cover these majority parts here. Now, I have taken up this slide just to warn you that this is the 2020 audit, and we have to be very keen, very cautious about this audit. The reason being, we have the three people here, the two Modis and the other one looking forward towards the Modi ji. Now, after the PNB case, after the Nirav Modi case, it is the responsibility of the statutory branch auditors which has been definitely increased, as well as it is very important that we should be very keen while doing our audit. Now, the first and foremost part to do any work, we have to do the preliminary work, that is planning. How we'll plan it? First is the acceptance letter, what the article can do to support the office or to support the team. You can take the leadership here and you can do the clerical work, which cannot be either possible with your boss or the employer. And though he has to take care all the responsibilities for the employer only, but we should take care that we should be very keen. We should take the leadership, we take the owners and complete the work as soon as possible. So the preliminary work which article should start or the CA student should start, that you first give the acceptance letter, prepare it and submit it to your boss or the employer so that they can sign it, check it and then give it to you. Secondly, NOC should be prepared immediately before giving the acceptance letter so that previous auditors NOC can be taken up. Then the issue of audit engagement letter as per SA 210, it is very important. Then to start with, this particular session is also planned to make you familiar about the guidance note, accounting policies of the bank and all this. Then we have to give a letter to the branch manager for requirement of the audit. What all we require, we'll definitely see it further. Then the most important part is to review various circulars issued by HO and closing circulars of that particular bank. These circulars are issued by the bank itself. We should demand these circulars, and this circular should be well studied before going to the bank for the bank branch for the audit. The reason being, we go there, we study it, and we are lacking in time. We have to complete a particular branch in 2 days, 3 days, 4 days, not more than that. So in this time, we have to prepare for the bank audit, say 5 days, 10 days back in our office itself by going through these circulars, going through the guidance note issued by ICAI, it is 2020 edition, then accounting policies on we have to go through. Then going there in the branch, we'll get the concurrent auditors report, RBI inspection, system audit report, stock audit report, and various kinds of audit reports which bank used to go on and off in the whole year. We should ask for those, we should study that, and we should take out the points and submit it to the team leader there. Now the risk assessment, definitely it is the part of the employer itself. Then the preparation of audit program and its execution, definitely will prepare a program, lay down an overall time schedule. This is very important.
Generally what happens, we devote a particular say 1 day, 2 day, 3 day, maximum it is 3 day. For example, we have a schedule of that particular branch, and for first 2 days we are just studying and only 1 day is left then to complete it. Then we, in haphazard manner, we used to complete those, the circulars we have not read, the things we have not done for first 2 days, and the last day we have to conclude it. So many times it becomes panic, and definitely we have to extend it. Many times we have tickets to go back to our home or to the another branch or whatever it is. But we should schedule our total program definitely with each and every hour itself. Ensure that the audit staff is satisfactorily trained. Definitely it is for your employer that we should be well trained, sufficient skill and competence for the specialized areas. Keep flexibility in audit plan. Definitely in course of audit you get something extra or you have to look for that. You should take care that where it should be a flexible plan. You should not be very rigid on the plans. Say going there you find some difficulties or you find something bad over there, you smell something and you don't able to give the time to that. So it is very important that we should definitely take care that audit plan should be very flexible. Then the audit program cover all the areas, all those areas I have mentioned here. This is the four corners we should work on. The liabilities, yes, definitely, assets, income, expenditure, and off balance sheet items. It is very important. Generally in our courses we used to study about the off balance sheet items, but when you go for the tax audits or the company audits or whatever it is, but we don't find the off balance sheet items on and off. But it is compulsorily that in the bank branch audit you will be getting the off balance sheet items also. Then verification of advances, income recognition and provisions. Definitely the next slides will go through this. And loan balancing files multiplied by 2. I have written this. This is term loan balancing file and CCOD loan balancing file, or jotting. Many times it is called as jotting also. You should take care of this. This is what you can take out from the branch in the text format. Then take the PNPA list. This is probable NPA list for January and February 19. Sorry, it should be 20 itself. January and February 20. Sorry, I have not changed the slide. Then UDIN generation for certificates and tax audit report. Definitely you are doing tax audit also for the branch, as well as you are giving n number of certificates. So don't forget that you do not generate the UDIN there. You have to generate the UDIN. Now, this is the whole list of auditing standards which are applicable: 210, 310, 400, 320, 530, 300, 220, 500, 230 and 580. It's over. इतना सब पढ़ने के बाद शायद बैंक ऑडिट नहीं कर पाएंगे, but these are applicable. So I have given a list of this. Definitely you can go through it. This is a lockdown period. You have n number of time here. Go through this particular essays so that you will be comfortable there. Now, the areas to be covered. Now the articles time starts that you have entered into the branch. The first and foremost job what you have to do is you have to take physical verification of cash. आप कैश का फिजिकल वेरीफाई कीजिए. ध्यान रखिए मल्टीलेटेड नोट्स को अलग ध्यान रखना है और कैश को अलग वेरीफाई करना है. बहुत ही अच्छा जॉब भी है. बहुत कीन रह के हमें ध्यान रखना है इसको काम करने के लिए. इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर दी हुई है. तो कैश को ढंग से वेरीफाई कीजिए. मैं एक टेक्निक बताता हूं आपको कैश वेरीफाई करने की. मान लीजिए 20 करोड़ रुपए पड़े वहां पे. 20 करोड़ गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी, हमको ये पता है. कोई बात नहीं, आप जो पैकेट्स हैं वो तो डायरेक्टली आप गिन लीजिए. उसके बाद एक बैग उन्हीं से मांगिए. उस कैशियर के सामने कुछ नोट उठा करके अपने बैग में डाल दीजिए. उस बैग को बंद कर दीजिए और वो बैग उनके पास रख दीजिए. अब जो बैग में नोट है वो आपको गिनना है और बचे हुए नोट गिन के कैशियर को देना है. तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप कैश को कैसे वेरीफाई करें. इट मे बी कॉल्ड एज जुगाड़ सिस्टम आल्सो, कि आप कुछ कैश निकाल लें और जो बचा हुआ कैश है आपको कैशियर गिन के बता देगा. अब जो बचा हुआ कैश आपके पास बैग में था उसको आप उसमें टोटल में जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली कैश वेरीफाई हो गया. ये एक तरीका है हाउ टू डू वर्क एंड हाउ टू गेट द वर्क डन. वन इज हार्ड वर्क एंड वन इज स्मार्ट वर्क. Whatever you like you can do. Then cash at ATM if maintained by the branch. Many times it is not maintained by the branch, so you're not supposed to take care of that particular ATM.
If it is maintained by the branch, definitely you should take care of that particular cash because it is part and parcel of the cash of the bank branch itself. Then security papers, it is very important, utmost important, that security papers and valuable securities should be physically verified. वहां पर डीडी जो है, जो चेकबुक्स हैं उनके पास स्टॉक में है, इट शुड डेफिनेटली मैच विद द रजिस्टर मेंटेन्ड. उसमें थोड़ा सा भी हेर फेर कहीं ना कहीं फ्रॉड को बुला सकता है. फ्रॉड ऐसे ही होता है, डीडी बुक चोरी हो गई, डीडी के 5 लीव्स नहीं है वहां पे, और 5 लीव्स नहीं है, वो 5 लीव्स कहीं ना कहीं डीडी के फॉर्म में घूम रही हो सकती है बाजार में. इसलिए अगर एक भी लीव आपको वहां नहीं मिलती है, डेफिनेटली रिपोर्ट इट इमीडिएटली एंड योर एम्प्लॉयर विल रिपोर्ट इट टू द रिस्पेक्टिव पीपल वेयर इट इज सपोज्ड टू बी रिपोर्टेड. सो विद utmost केयर वी शुड go for the physical verification of security papers and valuable securities. Then is the lockers. It is very important that with the locker register, you should check all those lockers are issued to the public. And if that particular locker is not issued to anyone, the locker register says that if this particular locker is vacant, definitely key should be with the branch and you should take care that you should see it open. उसको खोल के भी देखना है आपको कि ये खुला हुआ है या नहीं है. ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है यदि वहां पर लॉकर नंबर 230 नहीं दिया है, किसी को अलॉट नहीं हुआ और वो लॉक किया हुआ है, मींस इलीगली यूटिलाइज हो रहा है किसी भी पर्पस के लिए. ऐसा आपको लॉकर चेक करना है, लॉकर रजिस्टर चेक करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है और उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए. बहुत सारे ऑडिटर्स या बहुत सारे आर्टिकल जो हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली दिया है. नाउ द 6th पॉइंट इज फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स शुड आल्सो बी वेरीफाइड. दे हैव द कोडिंग सिस्टम. उसका कोड होता है. फिक्स्ड असेट्स को कैसे वेरीफाई करना है, अब मैंने देखिए लिखा है वेरीफाई फाउंड. वो इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस में आपको फिक्स्ड असेट्स रजिस्टर मिलेगा ही नहीं. ये एक बहुत बड़ी समस्या है बैंक ब्रांचेस की, स्पेशली हमारे एरिया में, जहां पर कि जो फिक्स्ड असेट्स रजिस्टर है वो अवेलेबल होता ही नहीं है. अब वो अवेलेबल नहीं है तो वेरीफाई क्या करेंगे. डेफिनेटली दे हैव द एंट्री इन द सीबीएस सिस्टम आल्सो. अगर सीबीएस सिस्टम में कोई पर्टिकुलर एंट्री दी हुई है तो आप सीबीएस सिस्टम में भी चेक कर सकते हैं कि वो वहां पर एंट्री दी है या नहीं दी गई है. देन इज योर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन. उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आपको चेक करना है कि वो डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है वहां पे. और उसके बाद असेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर आर एडेड हियर और नॉट. एंड फिजिकल वेरिफिकेशन विद कोडिंग. हर असेट के ऊपर पर्टिकुलर कोड लिखा होता है. से फॉर एग्जांपल इट इज एसबीआई एंड एसबीआई /1-31-776-8. इट मींस 8th नंबर ऑफ असेट. ब्रांच का कोड भी होता है उसमें. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज रहेंगी, आपको कोड से वहां पर वेरीफाई करना है, उस कोडिंग को ध्यान में रखना है और उस कोड के हिसाब से होना चाहिए. अब हम ये बात करते हैं, अगर हमारे पास रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो क्या हम चेक नहीं करेंगे? नहीं, हम फिर भी चेक करेंगे. यहाँ पर हम मटेरियलिटी कंसेप्ट लगाएंगे. मटेरियलिटी कंसेप्ट सेज दैट कि वहां पे जो मेजर असेट्स हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिए एंड मैच इट विद द फिक्स्ड असेट्स entered in the account there in the CBS. और अगर वो अवेलेबल है, प्रॉपरली असेट्स को उन्होंने लिखा है, तब कोई दिक्कत नहीं. अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू पास द एमओसी एंड चेक इट फिजिकली आल्सो. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑडिटिंग इन सीबीएस और द कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट. आप जब भी ब्रांच में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई प्रश्न पूछने पर आपको जवाब दिया जाता है कि सर ये तो कंप्यूटर में मेंटेन्ड है, इसकी एंट्री कंप्यूटर से ही होती है, ये कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट है. कंप्यूटर इज नॉट गॉड, कंप्यूटर इज अ मशीन. वी शुड टेक केयर दैट कंप्यूटर इज अ मशीन नॉट अ गॉड. तो वहां पर एक समस्या ये है कि हर चीज के लिए कंप्यूटर के ऊपर रिलाय करना ये जरूरी नहीं है. इट इज जस्ट अ मोड which is used instead of papers. We are keeping it into the soft copies. That's all. So we should not over rely on the computers. Definitely overall scope of audit does not change in this scenario. The only procedure will change. So this should be taken care of. Now we should be familiar with EDP and CBS system. It is very important. So I request each and every article that or the student or anyone watching, the staff of the chartered accountants, we should be very familiar with CBS. The reason being, you go there,
you sit on the computers and don't know what to do. The reason being, every function is very different. Say ACLI, HACLI, these are kind of the codes used in the Finacle, where you check the accounts, or you go for F11, F10, F5. Enter will not work there. Control, control keys and the function keys are very important. So going for the audit over there, what you should do is, definitely you should check it out whether this particular CBS you are acquainted with or not. For this, you can go on YouTube, as well as there are various codings available for Finacle 10 or the bank where you are going for. So you should be well acquainted with the CBS system itself. Then review the system, then verify the controls, definitely, and verify the exceptional reports. This is most important. Every day, what happens in every branch, there is a day wise report maintained in particular folder every day. Nobody is supposed to create those folder. It is automatically done immediately. EOD is there, end of the day is passed on. This particular file is created in the computer of that particular branch. What you have to do, just you have to go to the report folders, check out particular date, and get the exceptional reports. And we have to be very keen reading those exceptional reports, because it is very important where you are going for this particular reports, and you're not getting what it is supposed to say. वो क्या बताना चाहती रिपोर्ट, यही समझ में नहीं आ रहा, तो एक्सेप्शनल रिपोर्ट पढ़ के हम करेंगे क्या? तो इसलिए उसको रिपोर्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है. नाउ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एमओसी, what you have to do, the basic duty of the article is to prepare the documents where we have to take the printouts. Everything cannot be done by the employer. He is supposed to check. He is overburdened with the NPA classification, all this. So during this period, what you have to do is, you have to take care of very small things. You should carry the letterhead. You should carry the seal with you, so that you take the audit report printout on letterhead and not on the printed stationery of the banks. I have honor to work with the central statutory auditor also. So what I have seen is, the chartered accountant's audit report is given on the printed stationery where the logo of the bank has been given, and it is printed on the bank's stationery. So it should not be done. We should not overuse the stationery over there. And the date should be it is very important. It should be correctly dated, should not mismatch with the certificates and all that. So your auditor's report is very important, and it is a self-contained document. When you are preparing the audit report is itself a document, and it is not supplementary or the additional document which is supposed to be submitted. It is a very important document, and anything you want to report in the audit report, it should be reported in audit report itself. Do not give the reference. Point number 10C of LFAR, go to this. This is not a riddle which a statutory auditor or the banker is supposed to go for. They are supposed, it should be self-contained document. It should not have the reference of any other reports. Though annexes can be there, but you should not make any reference of the point. They say point number this of that, or that certificate or something like that. No, it should be repetitive, and it should be written in very clear. Now, what is LFAR? LFAR is given in generally a question answer form, and last it is say effective from 2015, and it is very important. You should read the total LFAR before going for the audit. What happens is, I have generally observed that the people used to go to the bank, sitting in the branch, reading the LFAR, and not understanding the what to report in this. They are not getting the question. It is into the question answer form. So these are the questions which you are supposed to answer, or many times we used to write yes, no, not applicable. This should always be avoided. Don't use this, and do not copy the last year's LFAR, because the last year auditor is not God. He's not your boss. He's not your employer. He's not your auditor. You are supposed to look into the LFAR and
make point that you report it immediately what you want to report. Do not copy paste from the earlier year's report. They may not be very competent as you are. So you are well prepared, you are more knowledgeable, so you can prepare better LFAR. So don't copy it from the last years. And no, yes, no, not applicable. This is the worst thing which we can do in the LFAR. Don't use this. Mention where you have to write it and keep it in the note. You should have the writing pads with you, and then there and then if you answer those questions, definitely you should ask those. And this particular LFAR very directive one, that it guides you and how to plan your work. LFAR, when you go with the question one by one, there are a number of questions given in the Excel sheet. So once you read it, the whole LFAR, definitely you can plan your audit accordingly. So it helps you to plan your audit also. This is secondly, compliance comments in the LFAR should be specific and not vague. Definitely it should be very specific, and if you are not able to comment on it, definitely ask your seniors that kindly comment on this. Secondly, this LFAR is supposed to be prepared by the auditor itself. Many times the branch head used to prepare the LFAR also, or their credit staff, because sir hum to har saal yahi banate hain. No, whatever it is, LFAR should be prepared by you itself, either you or your boss or your employer or your team member. So LFAR is the document of the auditor, and to be prepared by auditor only, not by the banker. Yes, definitely the annexure may be prepared by them. Definitely you should check those and get the annexures prepared, because many times these are very routine annexure which bankers used to prepare. Let them prepare those annexure, but you have to check those. Secondly, for the advances about 2 crore and above, there is a very clerical kind of details to be put in. They may be prepared by the branch heads or the branch people, so you can accept those, but this is a kind of obtained. One is the information obtained, and the LFAR have the another one is obtained created. The observations are there, so observations are created, and many times it are obtained. Obtained is a clerical information, and the very important is your thoughts should be observed, your observation should be there, and not the obtained one. आपके ऑब्जर्वेशंस कहीं से आप किसी और से नहीं ले सकते हैं, जरूर क्लरिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, तो जरूर ध्यान रखिए इसका. सो दिस इज ऑल अबाउट द LFAR. नाउ the very important which article can do is about the TDS. You know everything about the TDS. So whether TDS is deducted or not, monthly paid or not, quarterly, these are very important. What about the TDS certificates? What about 15 GANH, whether it is uploaded on the site? Many times bank used to take those and do not upload those, and they say customer who's having FDs or TDRs or whatever it is, they are coming and fighting with the bank that we have submitted on all this. So we should be, it is very important that we should take care. This 15 GNH, you are routinely doing this work in the office. The same is there, just to ensure that periodical adjustments of the advance rent has been done. Secondly, if any advance is paid or the lease is paid or the advance lease is paid, so TDS, you all know, nothing to discuss here. We don't waste time, we'll definitely move ahead. The TDS is the focus job of a particular team member. An article can perform very well doing the TDS job. It is not TDS job, this is TDS, which you can take care of very easily. Now, there are various certificates to be issued, including the Dost Gilani committee, where every time the banker used to prepare this, yes, no, not applicable, and 99% we don't even bother to check it also. Sir, ये हर साल मैं ही बनाता हूँ और ये हर साल ऐसा कैसे जाता है, कई बार तो लास्ट ईयर की फोटोकॉपी भी दे देते हैं वो. So don't accept those. Read the question, read the Gojilani committee recommendation right now, today itself, before going to the bank branch audit, and we should give our comments properly, not going for no, yes, no, not applicable, which the branch head has put in. Generally they used to prepare it, but don't accept those.
Then UDIN. Now the UDIN is mandatory. Many times when we are on the bank branch audit, we don't get the net connections in the branches generally. Especially in rural branch, we don't get. An urban branch, one or two computers are there. So definitely carry your laptops or the carry your dongles or the net connection you can get from the mobile also, and generate the UDIN there and then. Don't make it piled up. Say 3 branches are doing and coming to the office, then generating UDIN. Try to generate the UDIN immediately before conclusion of that particular audit. Just you concluded with the certificates, you concluded with the tax audit report, immediately generate the this UDINs, so that it is not piled up in the office, or you don't forget this to generate the UDIN. It is mandatory. Now the few general points I have written this out of my experience, that materiality should be observed. Definitely when we are talking about the say fixed asset register also, if it is not properly maintained and each and every asset is not there, say few assets are 10 years old or 7 years old, 15 years old, having a meager value there. So materiality should also be observed. If they have not written a printer which is say 6 years old, 7 years old, it is of say nil value as such. So if they have not taken into consideration, let it be, materiality concept should be observed. Looking to the size of the bank or the branch, we should have our own prudence, and materiality concept is always there with the auditor. So take care of that. So for a very silly thing, don't go again and again to the employer, or don't try to irritate the branch heads or the credit managers or the person in charge of the audit for the very silly things. This is very important. Many times I have observed that this has been not taken care of. Then the letter, we have observed it earlier also. Obtain the latest status of the cases involving fraud, vigilance, and matters under the investigation. Definitely you should take out the file, read out the file, make the points, and immediately report it to your employer. It is very important. Then we should have a management representation letter. Definitely various drafts are available nowadays. This MRL should be prepared, and the draft should be ready with you before going for the branch audit. This is the pre-preparation. Now, to make you technically equipped, what I have done is I have compiled this particular major circulars which are very important. You can just go through these circulars. We'll discuss few of those, not all those. The reason being, those are important. We'll go through it. The most important is COVID-19 relief. That was a very important circular. Kindly note, press note and circular are different. We should go with the circular, not with the press note. Press note is something different. I have also seen this. There is a ambiguity regarding the press note when you compare with the circular. So we are abide by the circulars only, not by the press note. Now, this is COVID-19 RBI circular. I have given it a fancy name, that is Kuch Corona. So everybody was trying to get something out of the finance ministry or the RBI, and they have come up with this particular COVID ki kuch to karte hain, chaliye kuch Corona. So this particular circular says about the rescheduling of payments for the term loans, means giving moratorium, and easing the working capital finance. Definitely this is a tough time. There is a liquidity crunch. So it gives the moratorium of say 3 months to the for month of March, from 1st March till 31st May. These are the 3 months which this particular COVID circular is allowing. That this but for the audit 2020, we are only concerned with the single month, that is March, 1st March to 31st March 2020. This particular installment or interest and installment and interest can be deferred for the next 3 months, as well as the same is for the working capital finance. But this circular is silent about the classification. Remember that this circular is not about the classification of the assets. It is talking only about the moratorium which is given for the next 3 months, but not about the classification. So it is definitely expected that again a circular will come about the IRAC norms, or deferring some or giving some relaxation or concession for this particular area.
but there is, as of now, it is not like that. So this is for the banks, financial institutions, and NBFCs, which can grant, can not should. It remember, it is not should. So can means वहां पर this is the option available with the borrower, and it is not blanketly applied to all the borrowers. This borrower, if any borrower wants this particular deferment, then he or she should apply for this, and the bank will allow the deferment. It is not like that blankly or blanketly every borrower is not supposed to pay this installment. Definitely there is no waiver of interest. We should take care of this, that it won't says about the waiver of interest. It only talks about the moratorium period. Definitely interest will continue to accrue on those outstanding amounts, and the borrower is supposed to pay it after 3 months. It is at the option of the borrower and not at the option of the bank. Now, whether this to be downgraded or not, so it should not be downgraded only because the deferment is allowed or the moratorium is allowed to be repaid. So it talks about there is no downgrade, standard will always remain standard, but take care that this do not apply to the February and January or the December month. So the installment to be paid in December is supposed to be paid in the month of February. It is supposed to be paid in the month of January. It is supposed to be paid. So it should be paid. If it is not paid, definitely if it counts to be NPA or the substandard or whatever it is, so it should be downgraded, but only for the month of March. If it is not paid and the request is received by the branch, then only it can be given as moratorium for next 3 months, or for the CC limit, interest should not be paid for next 3 months, or the recalculation of DP can also be done, taking care of the background material. DP can also be calculated accordingly and can be changed, and the extra benefit can be given. It won't count for any restructuring and no downgrade. Secondly, it should not be reported to CIBIL or any of the credit information companies. They are not supposed to take any action or adversely impact their credit history of this particular borrowers if they are not paid for the 3 months. Definitely. Now there is talk about the MSME. There are various circulars issued during last 2-3 years about the MSME. Those are very important. We should go through it before going for the audit. The important circular is issued on 1st January as well as the 1st January 19 as well as 11 February 2020. I have taken both the circulars because exactly identical these circulars are, and the same thing they say is a standard loan of MSME to be restructured without downgrade. Yes, if any standard loan is there, it can be restructured. This is one-time activity only. Then specified conditions are there which should be there. NPA loan to MSME can also be restructured, but it has to be downgraded. The only concession available here is that if it is restructured, we know that any account which is restructured becomes substandard. But here the MSME loan will not be substandard. It would be standard, though it is restructured only for once. This concession is allowed only once, not twice. There are 2 circulars of the 1st January, say due to 1st January 2019, if it is restructured and concession is given, made it a standard and restructured, it cannot be restructured again according to the circular of 11 February 2020. This is not allowed. Keep in mind, only restructuring concession can be given once. These are the specified condition that the total exposure should not be more than 25 crores. It should be GST registered. Definitely every article knows how to check whether GST registered or not. Go to the site, check it whether on the date of restructuring the GST registration was alive or not. May it happens that many times they have taken up the registration and it is not alive on that particular date, and restructuring should complete accordingly. The account, the very important thing is the borrower account should be in default. What default means, it should be overdue, whether it is for 1 day or 89 days. It should be in default. If it is very regular, every installment is paid in time, everything is good, it cannot be given this kind of concession.
it should have a default but should not be NPA. NPA is about 90 days. So from 1 day to 89 days, if it is there, any default is there, and it default should be there. If there is no default, no restructuring, no concession. If it is for a single day, it is overdue, it means it is eligible for this particular concession, and restructuring should be implemented before 31st March 2020. That is for the first circular, and for the second circular which came, it should be done by December 2020. So the clarification, it is one time activity only. It means that concession can be given once only. It cannot be given in the again in the second circular. So take care that only concession, but restructuring can be done again. It is not like that. Restructuring can never be done. Restructuring can be done, but it should be downgraded. The only concession here is that it should not be downgraded. Now, the checklist to avail the MSME concession, if any restructuring there, so it should be MSME. How it can be proved? It can be proved that whether it has a Udyog Aadhar or say it is state or central government registration, it should be MSME. But many times all these are not available. You cannot claim that it is not MSME, because Delhi High Court case is there. If MSME is there and registration is not available, you cannot deny that this is not MSME. It is MSME. Definitely aggregate exposure, there should be a CA certificate, GST registration should be alive, account should be standard, but in default, overdue should be there. Fifth point says it is overdue, very important, and evidence of confirmation of implementation should be there, that every activity is done. Now, this master circular is very important. This is a Bible for the IRAC norms or the prudential norms on IRAC, that what kind of provisioning can be done. Master circular है ये, इसका number सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने slide को use किया है. Kindly note this circular and you should go through this circular. It is very important. Along with this, we'll take next slide. What is the asset classification? There are three kinds where asset classification is done. One is standard, second is substandard, and third is loss assets. Somewhere doubtful is missing. Yes, substandard includes doubtful. So standard, substandard, and doubtful. This is the doubtful 1, 2, 3. Doubtful 1 up to 1 year. Doubtful 2 1 to 3 years. Means substandard up to 1 year. Then doubtful substandard, then more than 1 year and less than 3 years, and more than 3 years, it is doubtful 3. Now, what are the NPA norms for term loan? For the term loan, interest and oblique or means interest or installment, interest and installment remains overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan, it is NPA. Now, very important to calculate the days. This is the leap year. Very important. This is a leap year. So 31st December, say it is non-leap year. Say we are going for the audit in the year of 2019. If it is non-leap year, January 31, then we have February 28 and again 31. Total is 90. Here, when you have a leap year, it is 31, 29, 31. It is 91 days. So, which is due by 1st of January also, it becomes NPA, because 90 days will be counted from 2nd January, not from the 1st January. So, while calculation, you should be very keen that this 2020 is a leap year and it has 3 months, means 91 days, not 90 days. It is not applicable to agri loans. We'll definitely see in the next slides. Now, NPA for term loans, if arrears of interest and principal are paid by the borrower in case of loan accounts classified as NPA, the account should no longer be treated as non-performing and may be classified as standard asset. This is the RBI master circular, but it should be understood very easily, very keenly. Upgradation is allowed only if account reaches no overdue status. नो ओवरड्यू स्टेटस. मान लीजिए कोई अकाउंट एनपीए था, उसमें पैसा आ गया अभी और अब वो एनपीए नहीं रह गया, उसको अपग्रेड कर देना चाहिए. यस, बट देयर शुड बी नो ओवरड्यूज. एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं. मान लीजिए कि कोई अकाउंट एनपीए हो गया था इन द मंथ ऑफ से जून इटसेल्फ. जून के महीने में वो एनपीए हो गया और बैंक ने ही क्लासिफाई कर दिया, हमारी जरूरत भी नहीं है, बैंक ने क्लासिफाई कर दिया.
अब उसमें पैसा आ गया। अब पैसा आ जाने के बाद में जून 2018 में जो एनपीए हो गया था, फिर वो आगे गड़बड़ चलता रहा। पर इस साल दिसंबर 2019 में, सॉरी फरवरी 2020 में आया वो, उसको पकड़ के लाई बैंक। उन्होंने कहा आप रेगुलर कीजिए। यस सर, हमें प्रॉब्लम थी, हम अब पैसे जमा कर देते हैं। उसने 31 दिसंबर 2019 तक का पैसा जमा कर दिया। हमारे एग्जाम्पल में 31 दिसंबर 2019 तक का पैसा जमा कर दिया। यस, अब 90 डेज का हम ओवरड्यू चेक करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च कोई बात नहीं, एनपी नहीं है, नहीं। पर उसने जमा किस दिन किया पैसा? फरवरी 20 तारीख को, 20 फरवरी को आया था वो, और उसने जमा किया था। जिस दिन उसने जमा किया उस दिन ओवरड्यूज थे? यस, थे ओवरड्यूज। अगर उसने 31 दिसंबर तक का पैसा जमा किया है, इसका मतलब जनवरी और फरवरी 20 तक का, 1 से लेके 20 फरवरी तक का उसके पास में ओवरड्यूज था। So due to this 1 month and 20 days overdues, it cannot be upgraded as a standard. It will remain substandard or whatever it is. Am I clear on this? Now, what about the CC or OD? The account remains out of order in respect of an overdraft or CC limit. अब आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है उसको हम समझते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर दो तरह से हो सकता है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ लिमिट, मीन सैंक्शन लिमिट, और डीपी फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अब एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। से देयर इज अ सैंक्शन लिमिट ऑफ 1 crore, and this from the month of December itself it is 1 crore 5 lakhs, 1 crore 8 lakhs, 1 crore 10 lakhs or something like that, more than 1 crores. It remains till 31st March 2020. It becomes out of order. It is continuously over and above excess of the limit sanctioned to that particular account, so it will become NPA. Now the same example will continue, but due to the stock statement submission, the DP limit, drawing power, is say somewhere 80 lakhs, and this account is sanctioned limit of 1 crores, but the DP limit is 80 crores only. So if it remains say 90 lakhs, 91 lakhs, 93 lakhs continuously, but it is below the sanction limit but above the DP limit, again it will become NPA. So whichever is less, means DP or sanction limit. So DP cannot be more than sanction limit. So if DP is less than sanction limit, you should take care of the DP only and not the sanction limit. And it is out of order means it is continuously over and above that particular amount, it becomes NPA. The next case, it is very important. The balance outstanding is within the limit or the DP limit, but inadequate oblique no credits to cover the interest debited. अब यहां पर उसी में हम एग्जांपल लेते हैं। 1 करोड़ का लिमिट है, 80 lakhs का हमारा डीपी लिमिट है, बट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 20 lakhs ओनली। बट सिंस December, January, February, March, there is no transaction in this particular account, only there is interest debited. Say interest is debited at 10%, 12%, so 1% per month. 20 lakhs again, 20,000 for 3 months, 60,000. Credit is below 60,000, definitely it becomes NPA. It has this particular borrower has deposited say 40,000 in this particular account, but the interest is 60,000, so it is not able to cover the interest debited. Credits are less than the debits. So when the debits are more than credits, though it is within the limit, it becomes NPA. Now, what we have to do when we are going for the checking of this particular NPAs in case of the working capital advances, stock statement should not be less than 3 months old, right? So every article should go there. Ask for the stock statement file. Stock statement file is maintained with the branch head or the credit head there, and they'll give you the stock statement. Just check whether last 3, 4 months, 6 months stock statement are there or not. If stock statement is older than 3 months, it cannot be considered for as a stock. It is 0. So the stock statement not submitted for January, February, March will consider for NPA. No, it will not. ध्यान से देखिए इसको कि ये समझने की बात है। 0 कब होगी लिमिट? मार्च में जाके। तो आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा वो? अप्रैल, मई और जून के लिए। सो इट इज नॉट फॉर द इफ लास्ट 3 months.
say the last stock statement is submitted in the month of September somewhere, or say before the September it was somewhere in the March of April, May, June, July, August somewhere. So the last submitted of September, so October, November, December, the limit will continue for this 3 months. The DP limit will be calculated on the basis of the September stock statement for October, November and December. So it is not out of order. DP has not become zero, but in the month, for the month of January, DP will become 0, February 0, March 0, and anything outstanding in this particular account, this account will become NPA. So, but if the stock statement is not submitted in time, definitely it will count for LFAR. LFAR में हमको रिपोर्टिंग करनी है, प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है, बहुत सारे पॉइंट्स से रिलेटेड, वो फाइनेंशियल एंड डिसिप्लिन है, बहुत सारी चीजें हैं वहां रिपोर्ट करने के लिए, हमें वहां पे रिपोर्ट करना होगा. दूसरी बात, स्टॉक स्टेटमेंट लास्ट क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक शुड बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 जनवरी. ये भी ध्यान रखना है, कई बार वो नहीं मैच करते हैं. दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है, वो जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड है वो प्रॉपरली मेड हो, उसमें क्वांटिफिकेशन हो, उसमें वैल्यूएशन प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन हमें आती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज दैट इज वर्किंग कैपिटल गैप, उसमें 75% कौन फंडिंग करेगा, 25% करेगा, समझाने की भी जरूरत नहीं मुझे, उसकी कैलकुलेशंस हमें प्रॉपरली देखनी है. देन इफ देखिए मैंने नीचे एक बात और लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिन्यूअल और एडहॉक रिन्यूअल या शॉर्ट रिव्यू क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं. विल टेक 2 minutes फॉर दिस. Definitely it is going ahead of the time. We have started a bit late, so if you do allow me, I'll go ahead. In the messages you kindly put those so that I come to know whether I should continue with this or not. So here the 180 days are there, where the if there is no renewal, it becomes NPA. Without renewal, short review can be done only for 3 months, and only 2 short reviews are allowed. If it is more than 2 short reviews, definitely more than 180 days, हम अगर मान लीजिए उसका renewal नहीं होता है by any reason, definitely it will become NPA. It should be there. Last point हम पहले पढ़ चुके हैं. Agri loans, very important. Agri loans, crop season, जब भी बैंक ऑडिट पे जाते हैं समझ में नहीं आता है, हमेशा एक समस्या बनी रहती है कि वेदर विच पर्टिकुलर लोन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. वहां पर SLBC के सर्कुलर्स दिए होंगे. इट इज स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी इन एवरी स्टेट विच विल डिफाइन कौन सा क्रॉप लॉन्ग टर्म है, कौन सा क्रॉप शॉर्ट टर्म है. नो नीड टू अप्लाई योर नॉलेज. शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप इज फॉर अ ईयर और लेस, and the long term crop is more than a year. 2 crop season, if it is not paid, it becomes NPA, and 1 crop season if it is for long duration. सिंपल सी बात है. अगर हम MP छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जनरली शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होती हैं. KCC को समझने के लिए ऐसा है कि KCC अगर एक साल इस साल दिया गया है तो नेक्स्ट ईयर वो ड्यू हो जाएगा. नेक्स्ट क्रॉप सीजन जैसे ही खत्म होता है क्रॉप सीजन, मान लीजिए हम चेक करने गए हैं 2 क्रॉप सीजन, 1 क्रॉप सीजन, देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है. KCC लोन है, KCC के अंदर हमें ये देखना है कि अगर अप्रैल 2019 में दिया है, इट शुड बी रीपेड इन अप्रैल 2020. अप्रैल 18 में दिया है तो इट शुड बी रीपेड इन अप्रैल 19. नहीं पे हुआ है, कोई बात नहीं, अगला 1 साल और देंगे हम उसको. अगर अगले 1 साल तक वो फिर भी पे नहीं करता है तो इफ इट इज मोर देन 2 years, डेफिनेटली इट विल बिकम NPA. कोई क्रॉप सीजन देखने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. KCC का एक सिंपल फंडामेंटल है, 2 साल पूरे हो गए हैं वो NPA हो जाएगा. उसको चेक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, हाउ यू कैन इम्प्रेस योर चार्टर्ड अकाउंटेंट और द एम्प्लॉयर. उसको चेक करने के लिए आप CCOD लोन बैलेंसिंग फाइल लीजिए. CCOD लोन बैलेंसिंग फाइल को टेक्स्ट रिपोर्ट में होती है, टेक्स्ट से कन्वर्ट कर लीजिए एक्सेल में. एक्सेल में क्या करना है, आपको एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ओवरड्यू हुआ होगा तो उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट लग रहा होगा, इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा. सो मान लीजिए 12% इंटरेस्ट रेट है, 12% के बाद में 2% पेनल इंटरेस्ट लग गया, मान लीजिए 14% हो गया, टोटल 2 साल का हो गया 28%.
अगर 1 लाख की लिमिट थी तो 1,28,000 हो जाएगी। हम कैलकुलेशन के लिए उसको 30% मान लेते हैं, 28% भी नहीं। जो चीज 30% से राइज कर गई है, जो केसीसी अपनी सैंक्शन लिमिट से 30% ऊपर है, वो एनपीए है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको एक एक अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ केसीसी में आपको क्या करना है, जो केसीसी में डिसबर्समेंट 2018 में हुआ है, क्योंकि हम 2020 के बाद में ऑडिट पे जा रहे हैं, तो उसके पहले के जितने भी डिसबर्समेंट है वो सारे अकाउंट को आप ले लीजिए। उन अकाउंट्स में एक फॉर्मूला लगा लीजिए, सैंक्शन लिमिट आती है लिखी हुई उसके अंदर, सैंक्शन लिमिट के साथ में उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए था उसका सैंक्शन अमाउंट, और आज की तारीख में 4 लाख हो गए वो। इट मींस 30% अगर हम जोड़ते हैं तो 3,90,000 होता है, 3,90,000 होता है, और वो 4 लाख है, एनपीए है। आप पूरा एक लिस्ट निकालिए, उसके अंदर आपको पता है फिल्टर कैसे लगाते हैं। फिल्टर अगर मोर देन 30% का है, व्हेन यू कंपेयर विद द सैंक्शन लिमिट, इफ इट इज ओवर एंड अबाउट 30%, आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इफ इट इज मोर देन 30%, डेफिनेटली विल गो फॉर एनपीए। पूरा लिस्ट निकाल लीजिए, सैंपल बेसिस पे एक बार उसको और चेक कर लीजिए, और मैनेजर को दे दीजिए, वहां पे अपने एम्प्लॉय को दीजिए, देखिए सर पूरी ब्रांच का ऑडिट मैंने 5 मिनट में कर दिया है। So this is the table which I have given for the classification कि जहां पर टर्म लोन दिया गया है उसको क्लासिफाई आप कैसे करेंगे, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। ये एक रेडी रेकनर है। I have taken this table from the guidance note of the ICAI issued 2020 edition। यहाँ पर चैप्टर 10 पेज नंबर 271 से लेके 275 के बीच में आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ 4-5 पेज को पढ़ लीजिए, अदरवाइज फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाइए ब्रांच ऑडिट पे जब भी जाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, हर आदमी कंफ्यूज है, और हर ब्रांच के पास अपना एक नॉलेज होता है कि कौन सा एनपी होगा, कौन सा एनपी नहीं होगा। हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई को फॉलो करना है, ध्यान रखेंगे हम। नाउ द आरबीआई क्लैरिफिकेशन एक आ चुका है। इसके पहले महाराष्ट्र एसएलबीसी ने एक क्लैरिफिकेशन आरबीआई से मांगा था, जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे, बट इमीडिएटली 2 कंसेक्यूटिव हार्वेस्टिंग सीजन वहां पर किया गया है, वो देखना है तो ही एनपीए होगा। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया था। हाउ टू डू दी स्मार्ट ऑडिट, आपको जो एनपीए का ऑडिट है वो स्मार्टली कैसे करना है, हाउ यू कैन स्मार्टली डू दिस ऑडिट, आई हैव गिवन दी स्टेप्स। सो गो टू द रिपोर्ट फोल्डर, डेट वाइज आपके पास रिपोर्ट फोल्डर दिया हुआ है, वहां पे आप देखिए लोन बैलेंसिंग फाइल मिलेगी, जिसको सीसीओडी लोन बैलेंसिंग फाइल और टर्म लोन बैलेंसिंग फाइल कहते हैं। मैंने आपको प्रोसीजर बताया अभी सीसीओडी लोन बैलेंसिंग फाइल को कैसे यूज करना है, और एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट की भी हमने बात की थी, वो भी वहां मिलेंगे आपको, जिप फॉर्मेट में मिलेगा। आप उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, एक्सट्रैक्ट करके एमएस एक्सेल शीट में कन्वर्ट कीजिए, एक्सेल खोलिए, उसमें टेक्स्ट का डेटा इंपोर्ट कीजिए, टेक्स्ट टीएक्सटी जो डेटा होता है उसको इंपोर्ट करते हैं, नहीं आता है तो यूट्यूब पे एक बार आप देखिएगा, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और उसको कन्वर्ट करने के बाद जो सीसीओडी लोन बैलेंसिंग फाइल है उसमें मैंने केसीसी का आपको बताया कैसे चेक करना है। सिमिलरली फॉर्मूला हम सीसीओडी लोन के लिए भी लगा देंगे कि 3 महीने का, अगर मान लीजिए उसका सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ है, और अगर वो उसके 3 महीने के ब्याज से ज्यादा अगर उसमें है तो 100% वो एनपीए हो जाएगा। ओवरड्रॉन हम चेक कर सकते हैं, उसमें अगर ओवरड्रॉन है तो उन अकाउंट्स को आप चेक कर लीजिए। देन टर्म लोन अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म लोन अकाउंट्स में क्या होता है कि वहां पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उस रिपोर्ट में क्या आता है कि टोटल प्रिंसिपल डेबिटेड, टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड, प्रिंसिपल रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये कॉलम्स आपको उस रिपोर्ट में मिलेंगे। उस रिपोर्ट को जो भी नाम कहते हैं वहां पे आप देख लीजिए, उसमें ये 4 फिगर्स आना जरूरी है, प्रिंसिपल डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड, प्रिंसिपल रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमें चेक करना है 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू है या नहीं है। आप सिंपल सी बात है, अगर क्वार्टरली देख रहे हैं तो समझिए 25% है, मतलब एक क्वार्टर का पे नहीं हुआ है तो मतलब लगभग 25% इंस्टॉलमेंट हो जाती है वो। अब देखिए आपकी ये इंस्टॉलमेंट अगर हम चेक करते हैं तो प्रिंसिपल डेबिटेड एज कंपेयर टू द प्रिंसिपल रिसीव्ड, when you connect with the formula, whether this principal debited is more than 25% of this particular negative positive result out of the principal debited minus principal received। अगर वो 25% से ज्यादा है, मान लीजिए 30% है, 40% है, 50% है, तो डेफिनेटली वो एनपीए हो जाएगा। उसका एक रिवर्स तरीका भी है, आप एक काम कीजिए, प्रिंसिपल रिसीव्ड डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल डेबिटेड,
अगर वो 75% से ज्यादा है मतलब वो एनपीए नहीं है। जिसका भी 75% से कम रिजल्ट आ रहा है डेफिनेटली इट बिकम्स एनपीए, क्योंकि उसमें 3 महीने की किस्त नहीं गई है। सिंपल वे में पूरी ब्रांच का ऑडिट आप टोटल 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। एनपीए क्लासिफिकेशन अपने जो एम्प्लॉयर उनको निकाल देते हैं, ही और शी विल बी वेरी इंप्रेस कि देखिए हमारे आर्टिकल ने जो है इतना बढ़िया सीख करके और 15 मिनट के अंदर एनपीए क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसके अंदर कई बार 5 दिन या 7 दिन भी लग जाते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन टू कैटेगराइज द advances as NPA as on the date of finding irregularities, no, it should be on the date of irregularity persisted, किस दिन है वो। अब टर्म लोन की फाइल को हमें चेक कैसे करना है, उसके लिए मैंने बेसिक पॉइंट्स निकाले हैं कि चेक द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज डन व्हाइल सैंक्शनिंग ऑफ द लोन्स। उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। सैंक्शन लेटर जो दिया गया है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि ब्रांच हेड की पावर जो है उसका एक सर्कुलर होगा, ब्रांच हेड का कैटेगरी होगा, वो स्केल 1 है, स्केल 2 है, स्केल 3 है, स्केल 4 है, एजीएम हेडेड ब्रांच है। वहां पर आपको पता करना होगा, सबसे पहले उनसे बात करके वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, और उनकी जो पावर्स हैं वो भी डिफाइंड है कि सीसी लिमिट कितना कर सकते हैं, ओवरऑल कितना सैंक्शन कर सकते हैं, टर्म लोन कितना सैंक्शन कर सकते हैं। वहां पर आपको सैंक्शन देखना है कि ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पावर से ज्यादा कहीं सैंक्शन कर देते हैं। Ensure disbursement is only done after compliance with the pre and post disbursement condition, pre-disbursement condition. Pre-disbursement conditions के बाद ही उसका डिसबर्समेंट किया गया है। अगर उसके बिना कर दिया गया है तो आपको रिपोर्ट करना है LFAR में। डिसबर्समेंट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू प्रॉपर अकाउंट्स। ऐसा नहीं हो कि उसको कैश विड्रॉल्स अलाउ कर दिए हो, उसके खाते में पैसा डाल दिया हो, नो। अगर मान लीजिए टर्म लोन है तो डेफिनेटली इट शुड बी पेड टू दी वेंडर्स, उसमें लिखा होता है। अगर कोई स्पेशल परमिशन दी गई है तो उसकी परमिशन होनी चाहिए रेस्पेक्टिव अथॉरिटी से। इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएटेड हो, और सरसाई रजिस्ट्रेशन हमें चेक करना है। सरसाई रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली कंकरेंट ऑडिटर्स चेक कर लेते हैं, बट हम भी इसे चेक कर सकते हैं, ध्यान देना है हमें। देन रीपेमेंट शेड्यूल इज प्रॉपर्ली पुट इन दी सीबीएस। अगर सीबीएस में रीपेमेंट शेड्यूल ही गलत डाल दिया और मोरेटोरियम गलत डाल दिया, तब जाकर के आप कभी भी एनपीए नहीं पकड़ पाएंगे, ना उसका पूरा कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो उसका जो मास्टर्स डेटा है वो प्रॉपर्ली दिया होना चाहिए। देन इंटरेस्ट रेट उसमें प्रॉपर्ली डले होने चाहिए। रेट वहां पे यदि मान लीजिए बेस रेट से लिंक है तो वहां बेस रेट से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूरा परसेंटेज ही उन्होंने डाल के रख दिया हो। देन वी हैव द इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्ली क्रेडिटेड, वहां होनी चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी आपको चेक करना है, उसमें हाइपोथिकेशन ऑफ द बैंक लिखा है या नहीं, ये चेक करना है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप तो जाकर के सभी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं, सभी जगह जा नहीं सकते हैं। सो इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्री एंड पोस्ट डिसबर्समेंट, प्री एंड पोस्ट सैंक्शन वो लगी होनी चाहिए। सर्च रिपोर्ट एडवोकेट के द्वारा होनी चाहिए। सर्च रिपोर्ट की जो लास्ट पेज होती है उसमें लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट द इक्विटेबल मॉर्गेज। वहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी हुई है, उस लिस्ट से आपको कंपेयर करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड्स प्रॉपर्ली दी गई है नहीं दी गई है। ब्रांच में नहीं दी गई है तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको रिपोर्ट करना है। नाउ कैश क्रेडिट को आप कैसे चेक करेंगे, अब हम देखते हैं। ये जो कैश क्रेडिट है इसके अंदर इसमें देखना है हमें प्रॉपर्ली डिसबर्समेंट हुआ कि नहीं, बाकी बहुत सारे पॉइंट सेम है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस हुआ है नहीं हुआ है, इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट है कि नहीं है, इंटरेस्ट पैरामीटर्स जो हमने पहले बात की थी विल नॉट डिस्टर्ब इट। नाउ द सेकंड लास्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 35, 36, 37 ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टॉक स्टेटमेंट MSOD। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट नंबर 35, 36, 37 जहां पर याद आ रहा होगा आपको जब आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी, वहां ये पूछा जाता है क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक, क्वांटिटी वाइज डिटेल्स वहां देनी है आपको, टोटल स्टॉक कितना है। वहां पर आगे ऑडिटर ने कमेंट किया होता है लुकिंग टू द nature of the business, it is not feasible to calculate the stock on the date, on this particular date or the verify the stock। आप देखिए कि जो ऑडिटर है वो साल भर में एक बार भी उसको वेरीफाई नहीं कर सकता है, ना चेक कर सकता है, ना क्वांटिफाई कर सकता है। बट आपके बैंकर्स कितने स्मार्ट है या आपका बोरोवर कितना स्मार्ट है कि वो हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट देता है, एवरी मंथ क्वांटिफाई करता है, बट 31 मार्च में नहीं कर पाता है। ये बहुत बुरी बात है, हमें इसको जरूर LFAR में रिपोर्ट करना है कि ऐसा ऑडिटर ने कमेंट किया है।
और जबकि ये हर महीने चेक हो सकता है। तो अब हो सकता है या तो स्टॉक स्टेटमेंट गलत है, हो सकता है ऑडिटर गलत है, हमें पता नहीं है, बट वी शुड रिपोर्ट। हमारी ड्यूटी जहां तक है हमें रिपोर्ट कर देना है। दूसरी बात, 31 मार्च 2019 की जो आपके पास में ऑडिट रिपोर्ट आई है, उससे आप जब कंपेयर करते हैं, व्हेन यू कंपेयर दिस पर्टिकुलर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक विद द स्टॉक स्टेटमेंट गिवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दे वोंट टैली। वो दोनों टैली ही नहीं होते आपस में, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसे भी आपको रिपोर्ट करना है। इफ स्टॉक गिवन इन द ऑडिट रिपोर्ट एज क्लोजिंग स्टॉक फॉर द 31st March 2019 and the stock statement for the year for the month of say March 2019 as of date of 31st March 2019, if do not match, डेफिनेटली यू शुड रिपोर्ट इट। आपको लास्ट ईयर का स्टॉक स्टेटमेंट चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाउ द प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजनिंग फॉर D1 is 25, 1 to 3 years is 40% and more than 3 years is 100%। नथिंग टू वरी अबाउट, एक बार क्लासिफाई हो गया, प्रोविजनिंग ऑटोमेटिकली टेक केयर की जाएगी। नाउ फॉर द सब स्टैंडर्ड इट इज 15%, 25% when the total outstanding of loan is unsecured. Unsecured means ab initio, the very first time the exposure has less than 10% of security, वहां पे collateral and primary 10% से कम है, तो ये सीधे 25% बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है हमें। Then valuation of securities, very important, you have to check whether valuation of securities are there in every 3 years। हर 3 साल में उसका वैल्यूएशन होना जरूरी है। 3 साल से पुरानी यदि कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट है, यू शुड मार्क इट इन द LFAR दैट वैल्यूएशन इज नॉट कंडक्टेड विद इन 3 years, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 years। 3 साल से ज्यादा पुरानी अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट करना है। दूसरी बात, इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग NPA इट शुड बी डन, कि यहाँ पर आपका इमीडिएटली वैल्यूएशन हो, और उस वैल्यूएशन के बेसिस पे हो सकता है वो सब स्टैंडर्ड में न जाते हुए डायरेक्टली डाउटफुल में चला जाए या डायरेक्टली लॉस में चला जाए। रीजन ये है कि इफ इरोजन ऑफ सिक्योरिटी इज अप टू 50%, अगर 50% तक की अगर उसकी सिक्योरिटी इरोड हो गई है, एंड अप टू 90%, 50% से लेकर 90% की उसकी सिक्योरिटी इरोड हो गई है, डेफिनेटली इट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल एंड नॉट द सब स्टैंडर्ड। Secondly, if the erosion of security is more than 90%, it would be counted as loss assets directly. It should not be carried through substandard, doubtful 1, 2, 3, whatever it is. No, directly it is a loss assets if more than 90% security is eroded. So we should take care of this. Definitely, if advances are against NSC, KVP, IVP, life insurance policy, it won't become NPA. The reason being, it is against the liquid securities, उसको आप NPA मत कीजिएगा। या फिर गवर्नमेंट गारंटी उसमें है, तो डेफिनेटली वो जब तक रिप्यूडिएट या इन्वोक नहीं हो जाए गारंटी, तब तक वो NPA नहीं होता है। यस, फॉर गोल्ड लोन इट इज नॉट अप्लाइंग। गो any amount of gold is given as security, you are not supposed to bother about, definitely it will become NPA। और कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी है तो भी वो NPA हो जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट गारंटी। गवर्नमेंट गारंटी इज डिफरेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज डिफरेंट। Thank you very much. It was kind completion by 1 hour. In the exam is by renowned speaker CACS Pratik Tripathi ji. Pratik bhai has already taken one seminar in our branch. He is right now and he is dealing in ICAI cases also. He is very renowned name of Indore. So today I got one exam is by renowned speaker CACS Pratik Tripathi ji. Pratik bhai
Thank you, sir. Your words of wisdom were really captivating and knowledgeable for all the students. A big thank you to all the students and members who had joined us in all these webinar sessions. So at the end, I want to add that stay in touch with CICASA Indore on social platforms with Instagram, Facebook, Twitter, and other platforms. Thank you. Stay connected, stay happy, stay home, stay safe. Yes, sir. मेरा एक क्वेश्चन सर, संकेत सर। जी सचिंद्र जी। Yes. यस सर। हाँ, मैं 2-3 प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों की जी प्रॉब्लम्स उसमें ऐसी आ रही थी कि जी जैसे कई बार जाते हैं बैंक में, तो बैंक में हमको क्या मिलता है, डीपी जो होता है वो जी सैंक्शन लिमिट से ऊपर दिखा दिया जाता है। जी और कई बार मतलब बहुत से केसेस में ऐसा रहता है कि डीपी जो रहता है वो, तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम में ऑलरेडी उनके मैनुअल इंटरप्शन जो अलाउड रहते हैं उसको जी वो यूज करके सारी चीजें करते हैं। इस बारे में स्ट्रेट अवे हमको क्या करना चाहिए, पर अगर बच्चों को अपन ये बता सके, एक। और नंबर 2, अगर कोई एग्रीकल्चरल लोन है सर, एक तो क्वेरी को मैं, एग्रीकल्चरल, सॉरी ये जो आपने मुझसे पूछा है, सर, I'll address this particular query so that it would be very clear to the student itself. ऐसा देखिए कि जो डीपी जहां पर बढ़ा दी जाती है, सैंक्शन लिमिट से ऊपर डीपी दे दी जाती है, और वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सीबीएस। सो व्हाट वी शुड डू इज कि इस केस में हमें कभी भी ये ध्यान में रखना है कि डीपी लिमिट यदि सैंक्शन लिमिट से ज्यादा कर दी गई है, जो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू स्मार्टली चेक इट आउट, हम जो चेक करने की बात कर रहे थे, वहां पर यदि डीपी लिमिट ज्यादा दे दी गई तो इमीडिएटली वी शुड नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर अकाउंट एज हायर ऑफ दैट पर्टिकुलर डीपी, क्योंकि सैंक्शन लिमिट मान लीजिए 1 करोड़ और डीपी लिमिट उसकी 1,25,00,000 कर दी गई है, सो वो एनपीए कभी क्लासिफाई होगा ही नहीं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें रखना है कि अगर ऐसा कोई मैनिपुलेशन का केस आ गया है तो उस मैनिपुलेशन को चेक करना ऑडिटर का काम है। वी कैन नॉट ब्लेम इट कि ऐसा नहीं करें, वो तो करेंगे, you cannot stop them, you cannot stop the bankers, but definitely you should report it in the LFAR also, because it may amount to fraud. Materiality should be checked, or this is a kind of fraud which is done either on the request of the borrower or may not be on the request of the borrower, but we should report it in the LFAR also, and we should check it. If it is NPA, it should be directly reported in EMOC also. एक क्वेश्चन और सर, जी सर। एग्रीकल्चर लोन में सिर्फ क्रॉप लोन ही आते हैं कि एग्रीकल्चरल मशीनरी वगैरह परचेस करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह लिया, वो भी क्या एग्रीकल्चर लोन में आता है? Yes, agriculture loans are includes all the loan given to the agriculturist for the say agriculturist की हम तो एग्जांपल एक 2-3 एग्जांपल में लेता हूं। उसको फसल के लिए बीज खरीदने के लिए पैसा दिया गया है, उसको ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा दिया गया है, उसको ट्रॉली खरीदने के लिए पैसा दिया गया है। अगर ये पैसा दिया गया है और वो एग्रीकल्चरिस्ट है तो डेफिनेटली उसकी जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो एवरी 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट आएगी, ना कि 90 डेज नॉर्म्स लगेंगे। क्रॉप सीजन के हिसाब से उससे रिकवरी की जाएगी एवरी 6 मंथ्स। दूसरी बात, इसमें यदि किसी किसान ने कार भी खरीदी है, अगर किसान ने कार खरीदी है अपने पर्पस होम यूज पर्पस के लिए, उस केस में भी आपको 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट देखनी है, ना कि एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट देखनी है। बट इसको कंफ्यूज किससे नहीं करना है, मत्स्य पालन, बकरी पालन, इस तरह के भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसको एग्री बिजनेस से एग्रीकल्चर बोला जाता है, बट इट इज नॉट एग्रीकल्चर। वहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, और मंथली इंस्टॉलमेंट के केस में हमें वहां पर 90 डेज नॉर्म्स देखने हैं, ना कि क्रॉप सीजन देखनी है, क्योंकि मछली के अंदर क्रॉप सीजन नहीं होता है, ना आपका गोट फार्मिंग में कोई क्रॉप सीजन होता है। इट इज अलाइड एक्टिविटी। इन सब एक्टिविटीज में अगर लोन दिया गया है, और अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मिंग कर रहा है, जब जाकर के ही आपको 6 मंथ देखना है, और वो उसके पर्सनल यूज के लिए भी हो सकता है और एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है। थैंक यू सर। Right, sir. Thank you very much, sir. We have some questions in the. These are being highlighted by a few people here. मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहता हूं। यहाँ पर मिस्टर आडवाणी हैं, उन्होंने लिया इन सीसी एडवांसेस sometimes it is observed that stock statement of many accounts has not been received by the bank, so technically the DP becomes zero. In case, should all CC accounts be made NPA? Yes, definitely. If the account where they have not submitted the CC limit, this stock statement,
Definitely, if it is for the say month of the September, the last statement has been submitted for the month, and since last 6 months the no stock statement has been submitted, so it will become NPA. But for last 3 months, if it is not given, it should be definitely given to the LFAR, not the NPA. So for first 3 months it will become 0 DP limit, and then next 3 months it will become NPA. We have the other question from the Praful Giriji. Praful Giriji has, sir, cash balance 31st March 2020 is different from the date of audit of physical verification. Then what is the motive of physical verification case in some other date? Something like that. Definitely, sir. ये जो आप पूछना चाह रहे हैं, हम 31 मार्च को सभी ब्रांचेस में जा नहीं सकते, ये बिल्कुल सही बात है. और कैश वेरिफिकेशन क्यों किया जाए? वो इसलिए किया जाए, हो सकता है कि वहां पर कैश बैलेंस मेंटेन, मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत वाइल्ड एग्जांपल लेता हूं, वहां पर 30 लाख का कैश मेंटेन किया जाता है ऑन एन एवरेज बेसिस, बट द अवेलेबल कैश इज से ओनली 5 lakhs. 25 lakhs is used by someone or the cash people or somewhere else. तो वो आप कैसे पकड़ेंगे? आप जब अपनी डेट पे जा रहे हैं तो जो मूवमेंट ऑफ कैश है, एड एंड लेस करना है आपको डेली कैश बैलेंस, उसके बेसिस पे आपको कैश बैलेंस चेक कर लेना है. तो 31 मार्च का आपको कैश बैलेंस चेक नहीं करना है, जिस दिन आप जा रहे हैं उसी दिन का आपको फिजिकल कैश लेना है, ना कि 31 मार्च का. कैश बैलेंस डेफिनेटली डिफरेंट होगा 31 मार्च से. आप मान लीजिए 4th में को गए, 10th में को गए, जिस दिन गए उस दिन का कैश वेरीफाई करना है, और उसी दिन का कैशियर का जो नोट है उससे वेरीफाई करना है, कैश बुक से नोट करना है, और उसका एक सर्टिफिकेट लेना है, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ माय विजिट द कैश बैलेंस वाज दिस. तो 31 मार्च से आप कंफ्यूज मत होइए, जिस दिन गए उसी दिन आपको जाकर के वो चेक करना है. Mr. Chintu Advani has from Bilaspur, he has asked the question. One more question is from the this is the thank you message, sorry. So I believe that we have taken all the questions. Thank you very much for being so patient listening here. Thank you, Sachendra ji. We enjoyed a lot. Thanks, Karthik, you being a good moderator here. And again, CICASA is launching a new series from tomorrow with the kind support of Sachendra Jain Saab and Amitabh ji also from Raipur. Tomorrow we'll be having a new topic that would be how to take care of your eyes, because we are more and more using our mobiles, laptops and TV during this lockdown, and there are few confusions regarding the COVID-19 कि हमें क्या क्या समस्या हो, क्या सिम्टम्स होंगे जिससे कि हम कोविड-19 के बारे में जानकारी ले लें. उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर, एक डॉक्टर अभिजीत खंडेलवाल कल आने वाले हैं. So we'll be having an excellent talk. Thank you very much for them. Karthik, to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sachin. Thank you, Karthik. The nice session. Thank you.